I don't know, and then you directly move on. कि भाई अगला question is again a fresh question. I should not be thinking about the earlier question. Like this is what I used to do. तो ऐसा ही कुछ होगा तुम्हारा भी, right? Exactly. So I think ये आता है हमारी प्रिपरेशन से. अगर हम अपने डाफ और अपने बेसिक्स पे सॉलिड हैं तो हमें पता है कि वी बी एबल टू आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन. तो हम कॉन्फिडेंटली रहेंगे. अगर कोई क्वेश्चन हमें नहीं आया तो हमें पता है कि दैट क्वेश्चन इज नॉट लाइक कि हमें ये आना ही चाहिए था. अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो उससे शायद हमारा कॉन्फिडेंस हिट भी करता है. बट अगर कोई ऐसे रैंडम से क्वेश्चंस पूछेंगे और वो हमें नहीं आया तो दे आल्सो डोंट एक्सपेक्ट अस टू नो इट. और लेकिन उस दिन वी शुड गो विद दैट एकदम ही पॉजिटिव माइंडसेट, यू नो, एकदम फेक इट टिल यू मेक इट टाइप्स. क्योंकि बीइंग नेगेटिव इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस इन एनी वे दैट डे. इट इज ओनली यू नो I'm not a big fan of this, but हमें वो पॉजिटिव माइंडसेट लेके जाना ही है उस दिन. दैट यू नो, नो मैटर व्हाट यू कम अप एंड यू शो अप दैट ब्रॉड स्माइल. आपकी वो आपका डिसिप्लिन आपके पॉजिटिव अप्रोच में दिखना चाहिए. योर कॉन्फिडेंस एंड दैट यू नो यू आर रेडी टू टेक ऑन द चैलेंजेस और यू कमिंग टू दिस बोर्ड फॉर अ कॉन्वर्सेशन एंड नॉट फॉर एन इंटरव्यू. अगर आई थिंक you exude that interview wali body language, so they also catch on to it. But if you engage with them more like a conversation, then it gets fun for both of the sides, I think. मेरे इंटरव्यूज में मुझे ऐसा लगता था. Yes, ऐसा ही है. मतलब जितना ज़्यादा conversation, open to conversation वाला attitude होगा तो that will help them also. In fact, मेरे साथ तो जैसे पहले इंटरव्यू में मेरे को तो बोल ही दिया था. बाद में तो दोनों मैम ने लिए थे तो she was pretty formal about the things. But जो पहला इंटरव्यू था back in 2017 उसमें बोल ही दिया था कि just a conversation with elders and what not. So you said something like humor. You used humor. What was that? Some people are asking about it. Can you please elaborate more on how you used humor to your benefit? Somebody has asked it. So number one, I think आपको you know my personality. So most of the time I'm really cheerful. And I entered the interview room also like that. But I was very sincere when it comes to giving the answers and whatever they were expecting me to. But at one point, so in my first interview, what happened is, like I was telling you know that I used to give examples from my personal experiences. So there was this lady member and she asked me, you know, how has Delhi been as a city for women? Is it safe? And at that time, it wasn't even deliberate. It just came naturally to me that, you know, I should have said all the schemes existing in Delhi for women safety and all of that. But rather than that, I started narrating my own experiences in Delhi. That when I first came here, this was the scene. Now, after 3 years, the buses have lighting, women have free travel, all of that. And the answer wasn't coming out to be very coherent because in my mind I was like, why am I not saying out concrete measures and schemes? Why am I narrating my experiences? But to wrap it up, I blurted out, ma'am, rest I'm not able to remember many things because my hostel curfew was only 7 p.m. And and that one was not deliberate. So I wasn't expecting them to take it in a lighter way, but they all knocked on it. So I was like, chalo, bach gaye. But in my second interview, what happened is, so two of these panelists, they were really asking me very tough questions, जिनके बारे में you know, I mean, कि मीडिया को रेगुलेट कैसे करे, मीडिया इज नॉट ऑनेस्ट, ये है वो है. They were leading me to say कि गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द मीडिया ऐसे करके. और वो कॉन्स्टिट्यूशन वाले सर भी पूछे जा रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट रियली हेल्प्ड अस इन एनी वे, ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे. तो जब उनका when the next panelist came who was asking me questions on the media, तो then so first panelist के बाद I was little कि बहुत ज़्यादा अच्छे आंसर्स मैं नहीं दे पाई थी.
but second panelist के मैंने journalism वाली questions answer किए, and then he asked me कि the finance news reporting channels जो होते हैं finance news वाले, do you think they give true reportage? Is the reportage correct? तो उस टाइम पे फिर अगेन आई न्यू कि अब मैं पिछले 5-10 मिनट से दोनों थर्ड्स के बहुत टिपिकल सीरियस हैवी क्वेश्चंस आंसर करती हूँ, जिनके आंसर घुमा फिरा के वही है कि मीडिया पे तुमने 5 डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ लिए, बट घुमा फिरा के वही आंसर है कि गवर्नमेंट कैन नॉट रेगुलेट मीडिया, कोर्ट है, स्टेट है. तो फिर उस जगह फिर आई थॉट कि आई टेक इट अ लिटिल लाइटली. And then I said that unfortunately it's the curse of economists that they are said to predict the crisis after it has occurred. तो ऐसे के मैंने इसका जो क्वेश्चन था वो जिस तरह से फ्रेम था उसी तरह से आंसर दिया. तो वैसे करने के बाद चेयरपर्सन और बाकी सबसे अगेन वो जैसे काफी जोर से हंसने लग गए, एंड देन दैट मेंबर पास इट ऑन टू द नेक्स्ट मेंबर. और तब तक वो नेक्स्ट मेंबर भी काफी लेडी मेंबर, शी इज रियली काइंड, और वो भी काफी ऐसे वार्म अप हो गए थे. तो उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन भी मुझसे बहुत ही कोटेशंस वगैरह के बारे में पूछा, व्हाट डू आई मीन बाय समथिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, बिकॉज़ तब तक उनको भी पता चल जाता है दैट दिस इज गोइंग टुवर्ड्स मोर इन अ कन्वर्सेशनल डायरेक्शन. तो मोटा मोटा ऐसे कह सकते हैं कि इन दोनों जो व्हाटएवर यू जस्ट सेड उसके बेसिस पे मुझे जो इन्फरेंस मिल रहा है वो ये है कि प्रोबेबली बीइंग ओरिजिनल हेल्प्स यू मोर देन जस्ट कि तुम कि भाई वुमेन सेफ्टी में क्या इश्यूज चल रहे हैं. यू बीइंग अ वुमेन, यू बीइंग अ गर्ल, यू ऑलरेडी नो जो तुमको पता होगा, जो तुम्हारी पर्सनल लाइफ में भी हो रहा होगा, वो बताना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन जस्ट सिंपली जो तुमने मेंस में लिखा होगा. तो वो जो एक आपके इस बोलने से something that I had to say today was कि being a robot never ever ever helps. Or the standard, I did talk about balanced answers, but I would never say that go for a standard balanced one and personality that everybody asks you to be, ki your sari of this color, your bindi of this color, blah blah blah. They are really looking for somebody to have a good conversation with. और वहाँ पे सुबह से जो 50 लोग आए होते हैं, most of them are trained to say those balanced answers, and if your personality is like that, that's really good, but you shouldn't change your personality for sounding like the robot that UPSC chat GPT tells you to be. मतलब I took it really as an opportunity because like after coming from the room तुम्हें पता नहीं चलता है where those 30 minutes went. And you should really for the 30 minutes जितना आपने अपनी personality पे work किया है for UPSC preparation, it all comes out. And that part of your personality which they are looking for, somehow the balanced personality it never just shows it, and that's why most people tend to get बहुत ही average marks, because everybody is going and saying the same things. जैसे अब हर क्वेश्चन पे अगर दिल्ली के बारे में कोई पूछेगा तो somebody would say there are problems, but we have come very far also. This is what they say, everything they say there are problems, but we're improving, and there is a long way to go, but we have made positive steps. Every question ka you can answer it that way, right? Whatever they say, ye nahi ho raha, but it always helps to add a little bit of spice, a little bit of wit to your answers if possible. Right. Quite, it should be engaging, natural, rather than वो जो हम रट के जा रहे हैं. Got it. Any other things you would want to tell us apart from like depth conversation newspaper पे we have had? Some people are asking कि भाई आपके boards कौन से थे, तो I'm expecting एक तो शायद 24 तक रहा होगा. So first my board was TC Anand. And second was Preeti ma'am. Preeti ma'am is really good.
नहीं मतलब टीसी सर से इतने मार्क्स लाना तो अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग है। खैर मेरा 24 वाला तो स्पेसिफिकेशन गलत निकला, बट टीसीए सर से मार्क्स निकालना इज डेफिनेटली समथिंग। और वैसे भी सर तो मार्क्स देते भी नहीं, बट यस स्टिल टीसीए सर का भी मतलब ऐसा ही था कि बहुत मार्क्स देते नहीं थे, बट वहां से भी मार्क्स लाना इट मीन्स दैट एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं हमसे तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, लाइक तुम्हारा मेरा दोनों का एज मिला दो उतना तो उनके पास एक्सपीरियंस है। तो झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना या फिर उनके सामने फेक करना भी मुझे ऐसा लगता है बहुत ही डिफिकल्ट होगा। तो जस्ट बी ऑनेस्ट अबाउट एंड जो हम फेक कर रहे होते हैं वो भी उन्हें पता है कि हम फेक कर रहे हैं, पकड़ लेते हैं। रिलेटेड वो कि ये तो बच्चा भी है। एंड आई एम श्योर मेरी पर्सनालिटी में उन्हें बहुत ऐसे देखा होगा कि मे बी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो रही है एंड ऑल ऑफ दैट, बट at the end of the day they also know that you're 22 years old and they just want you to be the best version of yourself for those 30 minutes. That's what they want. राइट, तभी तो वो पकड़ पाएंगे ना कि व्हाट यू कैरी एज एन इंडिविजुअल। Exactly. What is your strength? लाइक अगर इतने टाइम्स माहौल में भी somebody could be that light, ठीक है, कि भाई वो बोलते बोलते वो ये बोल जाती है कि मेरे तो हॉस्टल में इतने टाइम तक था, that shows कि you can be light in difficult situation also, and only when you will be light in difficult situations then only you will be able to think about the problems that you will be facing as an IAS or as an IPS. You can disaster. I don't think that they're looking for everybody to be light. They are looking for your strength. जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ लाइटर वेन में मैंने कुछ बोल दिया तो दे विल प्रोबेबली थिंक ऑफ माय स्ट्रेंथ कि हाँ ये बहुत सारे लोगों के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकती है. शी विल नॉट प्रोबेबली lose her way and she'll maintain her calm in the face of challenges. बट अगर कोई बंदा ज्यादा लाइटिंग नहीं ले पा रहा है एंड वो उसकी ओरिजिनल पर्सनालिटी है तो एंड दैट पर्सन रिमेन्स सीरियस तो they think कि हाँ this is his strength that he is composed and he is not losing it up. इतना सब कुछ ये हो पा रहा है इसके बाद even then he is thinking, he is serious in his head, he might be thinking of things. तो ये सबका अपना अलग अलग स्ट्रेंथ होता है एंड द मूड इज आई थिंक meritorious enough and qualified enough to really judge us on our parameters इन सब के पीछे. और वही है ओरिजिनल पर्सनालिटी को ज़्यादा मॉडिफाई करना does more harm than really being yourself and not answering all of the factual questions. चाहे अगर आप ऐसे हो तो ऐसे ही दिखाओ, like you could be anything, वहाँ पे वही दिखाना, right? Okay, let me see if we have some questions or if you want to tell us any other thing. We have to be honest or sugarcoat things because I was very honest and I felt I was punished. Yes. Can I know the name of the person who is asking? Gursimrat Singh. Sorry? Gursimrat Singh is asking. Hi Gursimrat. So I think if you don't, sugarcoating is different, but telling things in a way that people would like to hear is different. So sounding really negative about everything, nobody wants to be with that person, but you want to be with somebody who gives you solutions. So without sugarcoating, if you can give them some better way out or a solution to something, that's lot better than either sugarcoating or giving a negative answer. So very often, if possible, they ask you an opinion about something. You can always begin your answer with that issue, but lead on towards the solution, towards making that particular situation better, rather than giving a blunt opinion that this is good or bad. You can probably say that doing this will make this better. So that way you can escape both sugarcoating and saying too much of negative about something.
Then I have another question. Amrita is asking ki, can you please elaborate more on how to engage with them, just as you told? If some more examples can be quoted by you. Okay, how to engage? So नॉर्मल I think करो यार, वैसे इंगेज हो जाएंगे, इसमें क्या ही इंगेज, खुद से थोड़ी इंगेज कर सकते हो. and one thing is Chal, just you answer. as far as possible, just add a few you know individual things to the answers. Like I said, NCC may just share your examples. If they ask me about journalism, I'll tell them that this is what happened, and if they ask this is what happened in my lessons, this is what I learned. Again about Delhi, I'll tell them what happened. Then I think in my second interview, they'd ask me, ma'am, one of the UB members should ask me, if you were to work on education for children, what are the three things that you'll work on? And I think उसी के 10-5 दिन पहले I was in Karnataka for Karnataka elections attachment, and I observed that बहुत सारे बच्चे वहाँ पे स्कूल में नहीं जाते थे. कर्नाटका में in rural areas we were stationed, so बहुत सारे बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे थे, and I was told कि after COVID school attendance खराब हो गया है. So I cited that example that my recent visit to some places has shown me that after COVID school attendance has taken a hit, so I try to work in that direction. उससे पहले भी मैम ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था that she asked me to decipher a quotation for her, because whatever men do, women can do 10 times better, and they shouldn't have a problem doing that because they are 10 times better. That was the entire gist of the quote. And ma'am asked me, do you agree with this or not? Recently, I read this quotation with this She did kind not of ask me quotation. to give a diplomatic answer. She said, just say yes or no. So I said a yes, and then I cited a few personal examples. जैसे NP training is very physical oriented, तो मैंने उनके example cite किए थे. So I would make everything personal. I wouldn't ask you to do it in extremes that हर answer में आप ये करो, but once with one member you can give it a try. ये तो ट्रिक अच्छी है. Right. And somebody asked another question. Sorry, मैं नाम मिस कर गया, ऊपर होगा उसका, बट मुझे क्वेश्चन याद है. उन्होंने ये पूछा था कि जब आंसर कर रहे हैं तो इज इट ओके इफ यू आर लुकिंग एट द पर्सन हु हैज आस्क्ड द क्वेश्चन, या फिर अगर कोई कॉर्नर वाला पूछ रहा है तो एक बार पूरे बोर्ड की तरफ तुम देखते हो, ऐसा कुछ उन्होंने पूछा था. यार ऑनेस्टली दिस इज रियली पर्सनल. आपको जैसा उस टाइम पे सही लगता है वैसा करिए. मेरा अप्रोच इसमें कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट था नहीं. फर्स्ट इंटरव्यू में मैंने जहाँ तक मुझे याद है ज़्यादा चेयरमैन जो क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो वो क्वेश्चंस थोड़े बहुत ऐसे थे जो मैंने एक्सपेक्ट किए थे. तो उस टाइम पे मेरे लिए थोड़ा इजी था सारे मेंबर्स की तरफ देखना. लेकिन जब दूसरे मेंबर्स थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछने लग गए, थोड़े डाइवर्स क्वेश्चंस हो गए, तो मेरा पूरा फोकस उन्हीं मेंबर्स की तरफ ही चला जाता था, क्योंकि वो एक के बाद एक क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे. तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं पहले उनका भी देखूं कि आर दे गिविंग मी एनी लुक ऑफ अप्रूवल, और फिर मैं उस बाकियों की तरफ भी देखूं, क्योंकि चेयर भी उस तरह से प्लेस थी कि पूरा इधर उधर घूम के देखना पड़ता था. तो इतना नहीं हो पाया था. बट सेकेंड अटेम्प्ट में क्या हो रहा था कि कुछ क्वेश्चंस मुझे बहुत ही पर्सनल लगते थे, किसी मेंबर के बहुत ही ऐसी पर्सनल इंटरेस्ट से आते हुए लगते थे. जैसे एक आर्मी वाले सर थे, तो वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछते थे, तो मुझे ऐसा लगता था थोड़ा बहुत कि पर्सनल उससे आ सकते हैं. तो जो पर्सनल मुझे थोड़े क्वेश्चंस लगते थे, उनमें मैं उनसे आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश करती थी. लेकिन जो क्वेश्चंस थोड़े और लाइट होते थे, जैसे कि मेरे ब्लॉग का नाम बनाना भी पब्लिक था, तो एक मैम ने मुझसे पूछा था कि हाउ डिड दिस नेम कम फ्रॉम और इट्स नेम की हिस्ट्री एंड ऑल. तो ये नेम थोड़ा ऐसे लाइट क्वेश्चन थे मेरे बारे में. तो और क्योंकि ये मेरे बारे में भी था और नॉट अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो फिर मैंने इतना टाइम और स्पेस था मेरे पास कि मैं बाकी सबसे भी आई कांटेक्ट कर पाऊँ. तो यहाँ पे क्वेश्चन टू क्वेश्चन जैसा माहौल था, वैसा मैंने चेंज करने की कोशिश किया. और क्योंकि ये काफी पर्सनल होता है, लाइक दिस थिंग इज वेरी पर्सनल. तुम खुद देखो, तुम क्वेश्चन के बेसिस पे देखो, इंडिविजुअल के बेसिस पे देखो,
टाइम के बेसिस पे देखो कितना सही आंसर कर पा रहे हो. कभी कभी क्या होता है कि यू आर लेस सही कॉन्फिडेंट में अबाउट सम जैसे क्वेश्चन. मेरे से एक बार ठीक है, पूछा तुम लंबे एक तरीके को इंटरव्यू में। देखते रहते हो तो तुम थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज ही करते हो गेन करने के लिए अदर एरिया. लाइक मैंने क्या किया था, मैं आधा ही मूव करता था. जैसे कि अगर फिफ्थ पर्सन इज आस्किंग मी, जो मेरे बिल्कुल बाजू में बैठा है, तो मैं मुंडी जो है सिर्फ चेयरमैन पे घुमाऊंगा. एंड आई ऑलवेज ट्राई टू एटलीस्ट सी चेयरमैन वंस और ट्वाइस उनके क्वेश्चन के अलावा भी. लाइक और जब वो पूछ रहे हैं तब भी मैं जस्ट वांटेड टू हैव अ ग्लैंस कि वो क्या कर रही होंगी, मैं क्या. तो ऑब्वियसली जैसा मैंने देखा, शी वाज ऑब्वियसली लिसनिंग. तो ये काफी पर्सनल है, बट हाँ देख लेना चाहिए बीच बीच में जहाँ जैसे मौका मिलता है. हाँ, बट उसी के चक्कर में कि आप देखो या ना देखो, जो आप हाँ, ओरिजिनल जैसा आपका बैठ रहा है ना, उसको खराब सही नहीं कह रहे करना चाहिए कि आप एकदम ही ना देखो या फिर एकदम इधर उधर देखने लग जाओ कि क्वेश्चन पे सिर्फ फोकस ही भूल जाओ. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा मेन मोटिव शुड बी टू आंसर द क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली एंड करेक्टली, रादर देन फोर्सिंग सच थिंग्स कि मैं इनको देखूं, मैं उनको देखूं. हाँ. Is it more better to say sorry or saying can I guess is better? है. I think you can take a guess. I think it doesn't harm एक्चुअली मिक्स unless करके they कर say कि सकते don't हैं. take a guess. We can ask कि I don't know, I'm sorry, I don't know, but can I take a guess? ऐसे करके. लेकिन एक बार वो मथुरा में जो है कौन सी आर्मी का वो है वो पूछा था मेरे से. ठीक है, तो I said that I don't know. I'm so sorry sir, but I don't know. Then he was about to move and then I said I can take a guess, I think it is 132. Then obviously he said no, this is wrong, this is not the unit I was talking. ठीक है, तो कर सकते हैं, it is up to them. How many marks should be given? Are they really helpful? Okay, I think I am a really good person to answer this. In my first attempt, I had a lot of time because I was living at home, so I took at least 15 more. But in my second attempt, I was in NPA, and everybody knows the famous schedule of NPA. So I took 0 marks in my second attempt, nothing at all. Not even like practice with my friends or mirror practice, nothing at all. So I think it really depends on the confidence level that you are at. If you are that sort of person who's going to समर्पण लगता है यार, समर्पण लगता है. एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना मतलब मेहनत करना, समर्पण से मेहनत करना. तुम्हारे पास सिर्फ तुम हो, इस सच को अपनाना, इस सच में जीना. मैं कह रही थी तुम्हारे अलावा तुम्हारे पास कोई और नहीं है. तो वो डिपेंड करता है कि आप अपना पर्सनालिटी कैसे internalizing this fact is prerequisite for preparing this exam. तो इट्स हेल्पफुल टू गो फॉर मोर एंड मोर मार्क्स, क्योंकि उस टाइम पे आपको पता नहीं होता कि आपकी प्रिपरेशन और करनी भी क्या है आपको, क्योंकि आप मैक्सिमम चीजें नेचुरली बोलने वाले हो. तो मोर मार्क्स काइंड ऑफ हेल्प यू टू गेट अकस्टम्ड टू मोर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. और कुछ ऐसी चीज देखना कि हाँ ये मैंने कहीं लेस तो नहीं कर दिया. बट इफ यू रियली वर्क ऑन इम्प्रूविंग योर पर्सनालिटी टू अ पर्टिकुलर टाइप फॉर द इंटरव्यू, तो आपको पता है कि आपने कहाँ कहाँ इम्प्रूव करना है, आपको कैसी कैसी चीज़ें बोलनी है. आपको 3-4 मॉक्स के बाद ही खुद ही समझ आ जाएगा. तो उस सिचुएशन में मॉक्स 8 पॉइंट्स के बाद ज़्यादा हेल्प नहीं करेंगे, रादर देन ब्रिंग योर कॉन्फिडेंस डाउन. कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा. तो I think that's how it has to be. Right. Okay, so last question, then we'll wind it up. Prashant is asking why do you think that you scored really good? Like what things according to you worked so well for you? Okay, you could score this high in interview. So Prashant, I think number one was because I was very confident in my interview. मुझे ऐसे कई आज भी कई जगह से लगता है कि ये आंसर उस टाइम पे बेटर दे सकते थे, बट जब मैंने बोला तब आई वाज साउंडिंग वेरी कॉन्फिडेंट as far as I feel. Number two, I did not really give them a staple candidate. तो दोनों ही टाइम मैं बहुत ही फ्लेक्सिबल माइंड के साथ गई थी कि मैं बहुत ही टिपिकल यूपीएससी टाइप आंसर्स नहीं दूंगी. जो मेरे मन में जो मुझे सही लगता है मैं उसे प्रॉपर वे में अप्रोप्रिएटली बोल के आऊँगी. और मैं बहुत ही ऐसे बोरिंग आंसर देके ख़त्म नहीं करूँगी दैट दिस इज हाउ दिस इज अ प्रॉब्लम बट वी कैन वर्क टुवर्ड्स इट. मैं ये स्टेटमेंट आंसर अवॉइड करूँगी.
जितना हो सके मैं अपने आंसर को थोड़ा पर्सनल टच देके आऊंगी, जहाँ हो सके वहाँ एक दो जगह में थोड़ा वेट ऐड करने की कोशिश करूंगी. So I think because of this, that really kept the members entertained. And third is because my bio was a little there was scope of a lot of questions from my bio, I think, because maybe I think second interview में तो members did not really pay a lot of attention on it, but even then given my education background, उसके बाद my service, then my hobbies, and then my blogging, so they had a lot of questions to ask from. जैसे उन्होंने मुझसे मेरी ब्लॉग के बारे में क्वेश्चन पूछा था, फिर उसी को उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन से लिंक कर दिया था. तो उस पॉइंट पे आई थिंक दे आल्सो न्यू कि ये सब बहुत ही रैंडम लिंक्स मैं भी प्रिपेयर होके नहीं आ सकती हूँ हर चीज़ के लिए. तो जो डाइवर्सिटी इतना बन गया था हर मेंबर के पास, उनको जो मुझसे पसंद था उस टॉपिक पे सब लोग क्वेश्चंस पूछ रहे थे. So I think that somewhere or the other that helped me because they also know कि मेरा टैप बहुत उस टाइप कम्युनिटी में exactly हर चीज़ predict कर दूँ और सबको प्रिपेयर करके आ जाऊँ. Right. All right. So guys, this was really good session. काफी सही I think मुझे तो लगा क्योंकि काफी examples के साथ समझाया. Thank you so much सिमरन. एक क्वेश्चन और जो आखिरी आया है लास्ट मोमेंट पे, this guy जिसने मुझे PM किया है, he got into IPS this year. तो वो ये पूछ रहे हैं कि हाँ, तो वो ये पूछ रहे हैं कि हाँ मतलब वो ये पूछ रहे हैं कि ये क्या किया जाए. Like did you prepare this question कि you being into IPS already, you are in IPS already, तो why do you want to join IAS? So honestly, that is one question that I always used to tell my friends at MBA कि ये question अगर आया तो ये मुझसे नहीं होने पाना आंसर, क्योंकि by the time I settled into service, और I think जहाँ तक आपको भी पता है मुझे काफी ऐसे पसंद आने लग गया था यहाँ पे रहना, तो I was really not prepared for this question, but फिर भी मैंने इंटरव्यू टाइम तक कुछ प्रिपेयर करने की कोशिश की कि मैं आंसर करूँगी. that proof of working is वही जो सब लोग बोलते हैं कि ज़्यादा डिपार्टमेंट के टच में रहते हो, ज़्यादा काम कर सकते हो, all of that, and वही staple answer है, this is a great service, but thankfully I was not asked. मैं तो इसमें कहना चाहूँगा it is the unavoidable breed. I was really happy that I wasn't, क्योंकि I wasn't prepared पर for एक this बार एक्सेप्ट कर question, लोगे तो प्रॉब्लम भी हो सकती है. कोई ढंग का आंसर होता भी नहीं. But I think if you're writing the exam again, then you have your own reasons, and it's always better to go with your original reason than saying for the end time that it's a different service which has a wider scope of working. You can always at this point, but start with something more personal to you, that you want to be here because of this personal reason and not because everybody says it's a wider service. बात तो सही है. Like मैं भी अगर मेरे को भी इसका क्वेश्चन का आंसर करना होता तो मैं यही बोलता कि भाई जो तुम्हारा एक पर्सनल रीजन होगा, like if it is just about job, तो फिर ये मत बोलना, ठीक है. बट मुझे ऐसा लगता है कि IAS के लिए हो सकता है कि इसके बहुत स्पेसिफिक पर्सनल रीजन हो सकते हैं. If somebody, like for example, if you have, let us say, that reason with you and it is very strong of a reason, then उसी को कोट करो मेरे हिसाब से तो. एंड अगर मान लो तुम्हारा बहुत स्ट्रांग नहीं है, वो जस्टिफाई नहीं करता है, अब तुम बोले मुझे तो पब्लिक सर्विस करनी है, तो पब्लिक सर्विस तो IPS में भी है, ठीक है. तो सर्विस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बस ये है कि वहां पे एक मोनोटोनस जॉब होती है और चैलेंजेस बहुत अलग लेवल के होते हैं IPS में. बट IAS में थोड़ी सी डाइवर्सिफाइड जॉब और चैलेंजेस अलग लेवल के होते हैं, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द बेसिक डिफरेंसेस. तो इसलिए मुझे लगता है कि पहला प्रायोरिटी शुड बी ऑन योर पर्सनल रीजन, कि जो तुमको लगता है व्हाई डू यू वांट टू डू समथिंग, तो वो. एंड इफ यू डोंट हैव, if you're running out of, let us say, options in that regard, then only you try to bring in the diversity ज़्यादा है and ज़्यादा impact लेके आ सकते हैं and policy making में हम सीधा रोल प्ले कर सकते हैं, whatever other reasons you think of. All right, so I think wrap it up. हाँ, कुछ बोल रहे थे? हाँ, वो मेरा मेन रीजन था कि अगर मुझसे इन कुछ ऐसा पूछता भी था कोई, तो आई यूज्ड टू, मुझे लगता है कि आई को वो मिड और सीनियर लेवल की पॉलिसी मेकिंग में ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकते हैं. तो आई यूज्ड टू थिंक ऑफ दैट एज माय रीजन.
बाकी having your own personal reason कौन सी मैगी? is more important because बात तो सही है, जैसा कि आपने बोला, सही you बोल रहे don't tell us why how IAS is different than IPS, why IAS is better than IPS or IFS is better than IAS, whatever. You tell us what are your reasons to go for this place. exactly. Right. ओके ठीक है फिर अब तो सिमरन के बारे में ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं तो गाइस मैं एक काम करूंगा आप जो उनके इंस्टा पे जाके ये सब पूछ लो कि क्या मेरी प्राइवेट अकाउंट है इंस्टाग्राम पे, मुझे और नहीं चाहिए फॉलोअर्स। तो फिर मतलब फिर तानी आप फिर छोड़ो देखते जो रहो भी क्वेश्चंस है वो सब कप्तान को भेज दो। कप्तान इज माय कैडर मेट, ही हाँ। हैज टू नो एवरीथिंग अबाउट मी नाउ, तो ये सब बता देगा। हाँ तो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सिमरन जो है फिर से एक और अटेम्प्ट लिख रही है क्या आईएएस बनने के लिए नहीं वो मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों पूछ रहे हैं सब क्वेश्चन वो सेटल हो गई है अभी लाइफ में ऑलराइट ओके गाइस थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इन